Good morning, dear students. This is Sudhi Shukla. Hope you are well. So, dear students, let's start our discussion for the problem solving. In our previous discussion, we have also solved two types of numerical based on C by N ratio and path loss. Similarly, today in today's discussion, we will also go for the problem associated with basic transmission theory. From there, we can able to calculate the received power. And I have told you the importance of received power. Why we are going to calculate the received power? What is the importance of knowing the received power? I have told in my previous discussion. So let me write numerical after it all. We will start our discussion for that numerical. So the question is, a geostationary satellite is located at a distance located at a distance, is it visible? Yes, of 3000 kilometer with an operating frequency 14.25 gigahertz. The gain of transmitting and receiving antennas are 15 and 20 simultaneously. If the transmitted power is 200 kilowatt, so calculate the power received by the receiving antenna. By the receiving antenna. Dear students, let me read out the numerical once again. यहां पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं उस दौरान जो ड्यूरेशन है while solving the numerical is quite more, and that is not expected from you people. क्योंकि जब हमें ये प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में मिलेगा या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलेगा, वहां इस तरह से डिस्कशन नहीं करना है. बस यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझना है और वहां पे सीधा ही अप्लाई करना है हमें. सो दैट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम we will able to calculate what is being asked in the question. So I'm reading once again. If the words are not visible to you, listen carefully. A geostationary satellite
सैटेलाइट के बारे में बात किया जा रहा है, that is what a geostationary. That geostationary satellite is located at a distance of 3000 km with an operating frequency of 14.25 gigahertz. The gain of transmitting and receiving antennas are 15 and 20 respectively. And if the transmitted power is somewhat 200 kilowatt, so we have to calculate the received power by the receiving antenna. What is the power being received? And this numerical is based on the basic transmission theory, where I have told you, I have derived that how we can calculate, or what is the importance of calculating the received power, that is P suffix capital R. So first of all, I have told you, while starting any type of numerical in any of the subject, just write down what is being given to you. So for the solution, first of all write given, the things which is being provided to you. Let me write here the given things. What is being given? Distance, I can take it as a, here it is written 3000 kilometer. So simply I can write 3 into 10 the power 3 kilometer, or I can write R to be as 3 into 10 the power 6 meter. Means R, I can write here it to be a 3 into 10 the power 6 meter. The operating frequency, that is F, is given as 14.25 gigahertz. That means I can write 14.25 into 10 the power 9 hertz. This is what operating frequency, and it is represented by F. Now the transmitting and receiving antennas gain are given, and I have told you how you can represent the transmitting and receiving antenna gain. Yes, that is represented by GT as well as GR. So GT is given as 15 and GR is given as 20. These are the respective gains for transmitting and receiving antennas. Next, what it is provided to you, the transmitted power, that is 200 kilowatt. That means PT is equals to 200 kilowatt simply, or you can write PT is equals to 2 into 10 the power, this is 3 and this is 2, that means 10 the power 5 watt. Dear students, first of all we have mentioned all the given data in a standard unit, standard format. There we can come to know the capital R means the distance between the earth station and satellite is what? 3 into 10 the power 6 meter. The operating frequency is given as 14.25 into 10 the power 9 hertz. GT is given as 15 and GR is given as 20. PT is given as 2 into 10 the power 5 watt. ये किलो है 10 के पावर 3 और ये 2 3 2 5 और you have 2 into 10 के पावर 5 10 the power 5 watt. So this is what PT. You have to calculate PR. So just think the relationship of all these parameters with that of received power. I have told you in basic transmission theory, there from there you can calculate.
Just remember the formula. So dear students, for calculating received power, that is represented by PR, that is given as PT into GT into GR and lambda upon 4 pi R का whole square. Means for calculating receipt power, you have to apply this formula PT GT GR lambda upon 4 pi R का whole square. So first of all, do yourself. Dear students, just put down all those values in this. तो आप इस रिलेशनशिप से आप देखोगे कि व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू हैवंट. PT, yes you have. GT, yes you have. GR, yes you have. Lambda, that is not with you. Lambda is not mentioned here. So you have to use the given data for calculation of this lambda wavelength. 4 pi is it constant. Capital R is provided to you. So let's calculate lambda. And we all know lambda can be calculated as lambda is equals to C by F. We are well known with it. So let's take the C value, that is 3 into 10 to the power 8 upon 14.25 into 10 to the power 9. This is what the formula while calculation of lambda. So जब हम 10 to the power 9 को ऊपर ले जाएंगे तो it will be 10 to the power minus 9, or we have to divide 3 with 14.25. The value is somewhat 0.210 फिर यहाँ पे 10 to the power minus 1, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी डेट विल बी 0.021 in meter. This is the calculated value for lambda. मतलब अब हमारे पास सारे डेटाज अवेलेबल हैं. सो अब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे सबकी और देखते हैं कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू फॉर दिस PR. So PT is given as 2 into 10 to the power 5. GT is given as 15. GR is given as 20. And this lambda value is given as 0.021 upon 4 into 3.14 into R is given as 3 into 10 to the power 6 whole का square. PT 2 into 10 to the power 5, GTGR 15 into 20, lambda 0.021 upon 4 into 3.14 into 3 into 10 to the power 6. That is what capital R is given. So we will solve step by step. That will not make you a complexity. So here I can write 15 into 2, that is 30, and 30 into 20, that is 600. So simply I can write 6 into
10 the power 2 into 10 the power 5, this value. So what you have? You have 6 into 10 the power 7. ये वैल्यू आ गई आपके पास. Let's solve for this value. First of all, just calculate it. ये तो वैल्यू एक साथ हो गई. स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सिंपली आई कैन राइट 0.021 का होल स्क्वायर, दैट्स वैल्यू इज विल बी 0.021 का होल स्क्वायर, दैट वैल्यू विल बी 4.41 into 10 the power minus 4. Upon this value will be 1419 upon 78 into 10 the power 12. ये स्क्वायर करने के बाद 10 the power minus 4 आया है, और ये 6 है यहां पे, इसका स्क्वायर करने के बाद 10 the power 12 आया है. सो 10 the power 12 को अगर हम ऊपर सेंड करें इन द न्यूमरेटर पोर्शन, वी हैव 10 the power minus 12. ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 the power minus 12. और फिर ये एक साथ ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? 10 the power minus 16. तो सिंपली आई कैन राइट 10 the power 4.41 into 10 the power minus 16. So dear students, ये वैल्यू आ गई हमारे पास. What we have here? 10 the power 7. So 10 the power 7 और 10 the power minus 16. तो यहां पे अगर हम लिखे 10 the power minus 16 और इस वैल्यू को हम एक साथ कर लें, मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू, so value will be 10 the power minus 9. Means here I can write 6 into 10 the power minus 9 with this value. So let me divide 4.41 divided by 1419.78. We have 3.106 let's suppose into 10 the power minus 3. So simply 3.11 into 6, we have 18.66 into 10 the power minus 12 watt. So we have the value received power to be PR is equals to 18.66 into 10 the power minus 12 watt. This is the received power value. ये पावर, इतनी पावर रिसीव्ड हो रही है जब सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन की दूरी 3000 किलोमीटर है, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 14.25 गीगाहर्ट्ज है, रिस्पेक्टिव गेन्स 15 एंड 20 हैं, और जो ट्रांसमिटेड पावर है सी, ट्रांसमिटेड पावर इज 200 किलोवाट, बट द रिसीव्ड पावर इज 18.66 into 10 the power minus 12 watt. See the difference between the transmitted power and the received power value. And this is what the basic transmission theory says. That is done basically numerically, from where we are able to calculate the received power. So this is a type of numerical. I hope if you have to take the screenshot of it, you can take it.
because I am going to rough it. We have to discuss the second type of numerical. I hope you have noted down. So dear students, कभी भी आपने न्यूमेरिकल लगाना हो तो उसके लिए न्यूमेरिकल में से आप पहले देखो कि कौन से डेटाज गिवन है. ऑलवेज राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डेटा, और फिर आप देखो कि क्या आपको कैलकुलेट करना है एंड रिलेट दैट कैलकुलेटेड पैरामीटर विद दैट ऑफ गिवन डेटा. जैसे यहां पे वेवलेंथ नहीं दे रखा था बट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी थी. विद द हेल्प ऑफ दैट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वी आर एबल टू कैलकुलेट दैट पैरामीटर. So we will discuss a second type of numerical, that is, the way will be different, but here also we have to calculate the received power. So first of all, let me write down the numerical. Determine the power received by a satellite located at 40,000 kilometer from the surface of Earth. Satellite is operating at a frequency of 11 gigahertz and has EIRP of 21 dB. The gain of a receiving antenna is 50.5 dB. Dear students, let me read out the numerical first. Determine the power received by a satellite. Again, we have to determine what? Received power. Located at 40,000 kilometers from the surface of Earth. That satellite for which we are talking about, that is located 40,000 kilometers from the Earth's surface. Means that is the distance in between. The satellite is operating at a frequency of 11 gigahertz, same as we have discussed in our previous numerical, and has an EIRP. I have told you about this parameter. What is EIRP? Effective isotropic radiated power. That is EIRP. And I have also told you कि EIRP है क्या basically. That is the product of transmitted power and the transmitted gain. That is PT into GT.
EIRP of 21 dB, that value is provided you in decibel. So put your ears straight while reading out the numerical. कान खुले हों, ध्यान से बिल्कुल आपने देखना है जो भी वैल्यूज या जो स्टेटमेंट्स में गिवन है आपके, या व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू. द गेन ऑफ अ रिसीविंग एंटीना इज 50.5 dB. So let me write down first of all the given data. What is being given to you? Distance, that is r 40,000 kilometer. That means 4 into 10 the power 4 kilometer. That means r is equals to 4 into 10 the power 7 meter. No doubt. 4 into 10 the power 7 meter. Again, the operating frequency f is given as 11 gigahertz. That is 11 into 10 the power 9 hertz. This is the value for f. EIRP is given as 21 dB. And the gain of the receiving antenna, that is GR, is given as 50.5 dB. So dear students, these are the data which is provided to you. And now we have to switch what is being asked to you. Power received. तो हमें देखना होगा कि how the received power that is represented as PR is linked up with this given data. Just think about it. कि कौन सा formula we will use so that we are able to calculate the received power. So let me write first of all solution for this numerical. PR is equals to, as what I have written in my previous discussion, PT, GT, GR in bracket lambda upon 4 pi r square. Similarly, मैंने थोड़ा सा उसमें अरेंजमेंट करके ये रिलेशनशिप लिखा है, विच इज कैन बी रिटन एज EIRP GR minus path loss in डेसिबल. जब कभी भी आपको रिसीव्ड पावर कैलकुलेट करना हो तो सिंपली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला और दिस यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप. EIRP, effective isotropic radiated power, that should be in dB, decibel. Receiving gain, that should also be in dB, both are in dB. And path loss, path loss जो आपने कैलकुलेट करना है, that should also be in dB. So ये दोनों वैल्यूज गिवन है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पाथ लॉस. So dear students, path loss is equals to फोर पाई आर अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर. मैंने बताया था इन माय डिस्कशन, जब हम ट्रांसमिशन थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, कि पाथ लॉस है डेट इज 4 पाई कैपिटल आर अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर.
अब लेट्स चेक आउट कि इस पाथ लॉस को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव and what we haven't. 4 pi, that is constant, need not to worry about it. Capital R, yes, it is being provided to you, that is what, 4 into 10 to the power 7 meter. But what about the lambda? The data what is provided to you is the operating frequency, that is 11 gigahertz, or what I have calculated here, 11 into 10 to the power 9. But what you have to calculate, lambda. So in our previous discussion we have calculated with the help of operating frequency, what, C by F. So now again calculate it down. Lambda is equals to C by F. C is equals to 3 into 10 to the power 8 and F is 10 to the power 9. This 10 to the power 9 will go here as 10 to the power minus 9 and the value will be, let me use the calculator. The value is 0.2727, repetitive, 10 to the power minus 9, that is 0.027 lambda into meter. ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई. व्हाट इज दैट? लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.027 मीटर. बट डियर स्टूडेंट्स, यहां लैम्डा तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन जो हमें पाथ लॉस की वैल्यू चाहिए, दैट इज नॉट अ नॉर्मल वैल्यू. द वैल्यू शुड बी इन डेसिबल, क्योंकि जो जनरली या तो हम इसको नॉर्मल में रखें, इनको डेसिबल से नॉर्मल में चेंज करें, और या तो इसको हम डेसिबल में चेंज कर ले. तो डू ऑलवेज व्हाट इज इजी फॉर यू. So while changing these two values, it is easy to change this single value, that is path loss. तो इसको हम चेंज करते हैं. Let us change it. So simply I can note 20 log 4 pi r by lambda. Simply we can write 20 log 4 pi r by lambda. And the value we have, that will be in decibel. No worries. वो वैल्यू किस में आएगी? डेसिबल में आएगी. सो लेट मी राइट डाउन 20 log in bracket 4 into 3.14 into r, that is what, 4 into 10 to the power 7 upon what is lambda? 0.027. हमें इस वैल्यू को सॉल्व करनी है और उसका लॉग वैल्यू ले लेना है विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 20. तो लेट अस सॉल्व. 50.24, 4 for the 16, 16 into 3.14, that is 50.24, divided by this 0.027. We have value 1860.740. So simply we can write 1.86 into 10 to the power 3, and the value here will be, so the overall value I am writing simply 1.86 into 10 to the power 10. So the final value for the path loss will be path loss value is 205.39, or simply I can write 4 dB. पाथ लॉस की वैल्यू ये आ गई, and we have all these values. So simply we can write here
EIRP की वैल्यू 21 dB, PR is equals to 21 plus GR, that is 50.5, and minus of 205.4. So let us calculate. We have PR value to be minus of 1339 dB. Dear students, क्वेश्चन कहता है कि आपको रिसीव्ड पावर फाइंड आउट करना है जब ये पैरामीटर्स गिवन है, और वो रिसीव्ड पावर आप बताओ कि डेसिबल में कितना होगा। तो हम देखते हैं उस ट्रांसमिशन के दौरान जो पाथ लॉस हो रहा है डेट इज 205.4 dB, इतने डेसिबल का तो पाथ लॉस हो जा रहा है। मतलब कुछ ट्रांसमिटेड पावर होगा क्योंकि EIRP में दोनों इंक्लूडेड है, ट्रांसमिटिंग गेन और ट्रांसमिटेड पावर। तो जितना भी ट्रांसमिटेड पावर, जितना भी पावर ट्रांसमिट हुआ, पाथ लॉस कितना हो गया, इतना डेसिबल हो गया। तो पाथ लॉस अगर इतना डेसिबल हो गया तो बाकी इस रिलेशनशिप से हम क्या जान पाते हैं कि हमारे पास जो पावर रिसीव्ड हो रहा है डेट इज 133.9 dB, इतना पावर रिसीव्ड हो रहा है। तो आई होप कि जो ये न्यूमेरिकल है यू अंडरस्टैंड वेल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिंपली जस्ट राइट इट डाउन। I will wait for a second. After it all, I will rough it. Just write down or solve it as I have solved. लेकिन ये मैंने बहुत टाइम टेकिंग लेके आपको डिटेल में समझाते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, बट यू हैव टू सॉल्व वेरी क्विकली। जब एक बार आपकी हैबिट हो जाएगी, वंस यू आर हैबिचुअल ऑफ सॉल्विंग इट, simply you can easily in a very short span of time you will be able to solve. तो हमने रिसीव्ड पावर को लेके डियर स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व्ड अ टू टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। द कैलकुलेटेड पैरामीटर वर सेम, PR received power, but the given data was quite different. So
So dear students, let's solve a second type of numerical. There this is different type. Let me write a satellite at a distance of 40,000 kilometer from a point on the Earth's surface radiates a power of 200 watt from an antenna with a gain of 17 dB in the direction of the observer. So find the flux density at the receiving point and the power received by an antenna with an effective area of 10 meter square. Dear students, let me write first of all, let me read out the numerical which I have written here. A satellite at a distance of 40,000 kilometer, same thing which we have discussed, from a point on the Earth's surface that radiates a power of 200 watt. The power radiated is 200 watt from an antenna with a gain of 17 dB in the direction of the observer. So find the what we have to find out the flux density at the receiving point, and we have to find out the flux density. Along with it, we have to also find out the power received by an antenna with an effective area of 10 meters square. तो need not to worry. जब हमें चिंता करना होगा तब हम करेंगे, बट अभी के लिए कोई टेंशन नहीं, नो वरीज. Let's start with the process what I have told you. Write down the given data. Let's write it. What is given? First parameter, transmitted power, that is PT is equals to 200 watt.
पीटी कितना गिवन है? 200 वॉट। जो एंटीना का गेन है, गॉट इट, तो एंटीना का जो गेन है दैट इज ट्रांसमिटिंग गेन, क्योंकि ट्रांसमिटेड पावर के साथ बोलता है एंटीना का जो गेन है 17 dB, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय GT and it is given in 17 dB. See, all ever the values are normal except to this value. This value is given in decibel. So we will find out the normal value for this 17 dB. तो तरीका क्या है? 10 log x जो GT की नॉर्मल वैल्यू कहला रही है, हम इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1.7 log of x is equals to anti log of 1.7, anti log means 10 the power, and the value will be this GT value will be GT is equals to 50 decibel. GT की नॉर्मल वैल्यू क्या आ गई? 50 डेसिबल। तो यहां पे हमने जो वैल्यूज कंसिडर किया ट्रांसमिटिंग गेन की, सॉरी 50, हम तो डेसिबल में चेंज ही कर रहे हैं, डेसिबल को तो नॉर्मल वैल्यू में चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज क्या आई, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट, 50 आ गई वैल्यू। अब अगर 50 की आप डेसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 17 dB इजिली। और फिर हमें क्या गिवन है? इफेक्टिव एरिया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस गिवन डेटा से वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी डियर स्टूडेंट्स क्या होगी? सॉल्यूशन फ्लक्स डेंसिटी दैट इज F। टेल मी कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए फ्लक्स डेंसिटी। ट्रांसमिशन थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था, बेसिक ट्रांसमिशन थ्योरी, वहां पे हमने इस पे डिस्कस किया था कि फ्लक्स डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। जस्ट रिमेंबर इट, सोचिए और बताइए। फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल F इज इक्वल्स टू, दैट इज व्हाट गिवन एज PT GT अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। पहले हम फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम रिसीव्ड पावर पे स्विच करेंगे। बट बिफोर इट वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स डेंसिटी क्या हो। तो लेट्स सी कि व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी हैवंट। वी हैव PT, यस वी हैव। वी हैव GT, यस वी हैव। वी हैव दिस R, यस आई हैवंट मेंशनड हियर, बस आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। 3 और 1 4 और 1 3 7। This is the value for R. So 4 into 10 the power 7 meter. Let me write down all those values. PT 200 watt to GT 50 upon 4 into 3.14 into R is what? 4 into 10 the power 7 का whole square. So this value is or simply I can write 10 the power 4 upon
Dear students, there is a mistake in this calculation. Here this value is 10 the power 4, 5 दूना 10, 3 और 1 4 अपॉन, here this value is 16 क्योंकि इसका होल स्क्वायर है ना, तो 16 चौको 64 इंटू 3.14 इंटू 10 द पावर 7 दूना 14 14, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 द पावर -14, और ये ऊपर हो जाएगा 10 द पावर -10. So this value will be 64 into 3.14, 200.96. 1 divided by answer is what? 4.97 into 10 the power -13. This is the value. I hope आप क्रॉस चेक कर पाओगे इसको. This is watt per meter square. फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास ये आ गई. Once we have calculated the flux density, that is capital F, we can calculate the received power. अगर हम रिसीव्ड पावर की बात करें तो मैंने बेसिक ट्रांसमिशन थ्योरी में आपको बताया था कि यू हैव फ्लक्स डेंसिटी, यू हैव इफेक्टिव एरिया 10 मीटर स्क्वायर. तो आप मुझे बताइए कि किस रिलेशनशिप के थ्रू हम रिसीव्ड पावर कैलकुलेट कर पाएंगे. टेल मी, जस्ट रिमेंबर इट. You have flux density. Yes, the formula is F into AR. What is F? 4.97 into 10 the power -13 into 10, and the unit is watt per meter square into meter square. So meter square get cancelled, and you have this value 4.97 into 10 the power -12 watt. This is what PR. So dear students, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए उनसे थोड़ा सा हटके था. जहां पे जो गिवन डेटास थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि हमें कैलकुलेट क्या करना था, फ्लक्स डेंसिटी. और फ्लक्स डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला था PTGT अपॉन 4 पाई स्क्वायर, थ्रू विच हमने कैलकुलेट किया वी हैव 4.97 इंटू 10 द पावर -13 वॉट पर मीटर स्क्वायर. फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर रिसीव. तो पावर रिसीव करना है विथ कंडीशन की जो इफेक्टिव एरिया है दैट इज 10 मीटर स्क्वायर. और फिर इस रिलेशनशिप के थ्रू हमने रिसीव्ड पावर क्या कैलकुलेट कर लिया, 4.97 इंटू 10 द पावर -12 वॉट. सो डियर स्टूडेंट्स, this type of numerical where it is being asked to calculate the received power means, while today's discussion in all of the three numericals we have discussed the received power, और यहां से हमने देखा कि तीनों में जो पूछा गया था व्हाट इज बीइंग आस्क्ड कि रिसीव्ड पावर कैलकुलेट कर ली. तो इससे हमें इंपॉर्टेंस पता लग जाता है कि रिसीव्ड पावर की क्या वैल्यू है. और वंस वे वी हैव रिसीव्ड पावर, हम पता कर पाते हैं कि हमारा सिस्टम कितना इफेक्टिव है, उसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से है. सो थ्रू दिस वे वी कैन सॉल्व. इसी तरह टाइप के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, और भी अगर मैं देखूंगा वीडियो में पोस्ट करूंगा, अगर इस टाइप के कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो नो डाउट
इनसे रिलेटेड जो भी होगा, पावर रिसीव्ड या फ्लश डेंसिटी या किसी भी, मैं उस पर वीडियो पोस्ट करूंगा. तो आई होप कि व्हाट आई हैव ट्राई टू make you understand, you got all my points. If you have any doubt, without hesitation, you can directly ask me. So this is all for today's discussion. Thank you, students. Thank you so much.